वो एक अच्छा ऑप्शन है, वो तो अपना एक अच्छा ऑप्शन है, उसको कोई टेंशन नहीं। So we also have here His Grace Devakinandan Prabhu from the early days, 77, 78 onwards. And there is another journey, second phase journey of establishing and the second phase, the heaven on earth. So he has done some wonderful service by means of which this was possible. We invite His Grace Devakinandan Prabhu to come on stage. His Grace Brajahari Prabhu is the temple president for last 13 years and also acting temple president before that for 3 years, and he is managing this temple so wonderfully, and because of his several, he was also very much the part of the second phase, this Heaven on Earth project. He has put so much effort, and we invite His Grace Brajahari Prabhu also to come on stage. Yes, Maharaj. So this temple was inaugurated on the 14th January of 1978. On that very day, we had a very special distinguished guest here, a lawyer by profession. He came to see how the temple is here coming up. And since then, he made his journey in Krishna Consciousness. And we have here Mahaprabhu Prabhu. Hare Krishna. Please come on stage. Please. So he is an example of how to use every visit of the temple and make progress in Krishna Consciousness. 41 years he is coming to the temple. 41 and counting. Hare Krishna. His grace Mahaprabhu. Prabhu. Yes, Narottam Prabhu, please welcome you. Please directly come on stage. Narottam Prabhu was the head pujari of Sri Radha Das Bihari in 1977. Narottam Prabhu. So we start the program with His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Sound. Hare Krishna. Om Jnanatimirasya Jnananjanashrakya Chakshunatanyena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manavestam Sabudamena Bhutare Swayam Rupakaramaya Saradhikna Pradikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktan Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। पिछले साल आप में से कौन कौन आए थे इस उत्सव पर? लगभग सब। तो आज हम मना रहे हैं 41st एनिवर्सरी। आज से 41 साल पहले श्री श्री राधा रास बिहारी जी की स्थापना हुई थी यहाँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा बॉम्बे इज़ माई ऑफिस, बॉम्बे मेरा दफ्तर है। और हम जानते हैं कि कितना संघर्ष प्रभुपाद जी को करना पड़ा इस मंदिर को बनाने में। प्रभुपाद जी का संबंध बॉम्बे से बहुत पुराना है। 1932 में
प्रभुपाद जी पहले बॉम्बे आए थे और उस समय भक्ति सिद्धांत जी ने कई सन्यासी भेजे थे बॉम्बे में मंदिर की स्थापना के लिए। तो प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे उस समय और प्रभुपाद ने गौड़िया मत के सन्यासियों का सहयोग दिया गौड़िया मत के पहले केंद्र की स्थापना के लिए। और प्रभुपाद जी ने इतने लोगों को जोड़ा था मंदिर के साथ कि जब भक्ति सिद्धांत जी बॉम्बे में आए उस मंदिर की स्थापना के लिए, प्रभुपाद जी के गुरु भाइयों ने कहा भक्ति सिद्धांत जी से, अबे बाबू ने इतनी मेहनत की है, इनको इस मंदिर का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। भक्ति सिद्धांत जी ने कहा जो ये कर रहे हूँ वो इन्हें करने दो, बाद में देखेंगे। 1935 में प्रभुपाद जी फिर बॉम्बे में थे और उन्होंने एक पत्र लिखा अपने गुरु महाराज को। उन्होंने कहा कि आपके अनेक सन्यासी शिष्य हैं जो आपके लिए बहुत सेवा कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, आपका क्या आदेश है मेरे लिए। और भक्ति सिद्धांत जी ने 1935 उत्तर में वही आदेश दिया जो कि उन्होंने 1922 में दिया था जब प्रभुपाद जी पहली बार मिले। तो प्रभुपाद पहली बार मिले अपने गुरु महाराज से, उनके एक मित्र थे, क्या कर रहा है, मलिक, जिन्होंने प्रभुपाद से कहा यहाँ एक खास साधु है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चलकर मिलो। प्रभुपाद जी के पिता बकायदा संतों की सेवा करते थे। प्रभुपाद जी ने कहा मैं किसी से भी प्रभावित नहीं हूँ, पर उस मित्र ने जिद की और जबरदस्ती ले गए प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत जी से मिलने के लिए। पहली मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत जी पहचान गए, पहचान गए ये है वो युवक क्योंकि महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को पूरा करेगा। तो भक्ति सिद्धांत जी ने वही आदेश जो 1932 में 1922 में दिया था फिर से अपने पत्र में लिखा और प्रभुपाद जी ने एक बड़ी प्रसिद्ध व्यास को जो ऑफर लिखी थी अपने गुरु महाराज के लिए, जो कि भक्ति सिद्धांत जी को बहुत अच्छा लगा। वो व्यास पूजा ऑफर भी यहाँ बॉम्बे में ही लिखी। तो प्रभुपाद जी का बॉम्बे शहर से बड़ा प्राचीन संबंध है और प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए थे और अमेरिका जाने से पहले सारा प्रबंध विदेश जाने का वो भी बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में प्रभुपाद जी श्रीमती मुरार जी को मिले थे और जब उन्होंने पहले उनसे कहा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ महाप्रभु के संदेश के प्रचार के लिए, श्रीमती मुरार जी ने कहा आप 20 उम्र में जाओगे, मर जाओगे, चलो वापस भी नहीं आओगे, नहीं जाओ। सब ने लगभग यही कहा। तो प्रभुपाद जी के मन में दृढ़ भाव था क्योंकि गुरु महाराज के आदेश को पूरा करना है। तो अत्यंत प्रयास से प्रभुपाद जी कार्गो शिप में गए और वो ये सारा प्रबंध बॉम्बे में हुआ था। ज़्यादा तो जहाज़ चला था कलकत्ता से, तो प्रभुपाद बॉम्बे से कलकत्ता गए और कलकत्ता से फिर जहाज़ पकड़ कर अमेरिका गए। तो प्रभुपाद जी ने पश्चिम देशों में अमेरिका पहुंचकर पहले इस्कॉन केंद्र की स्थापना की थी 1966 में और उस संस्था की स्थापना के पश्चात
प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को भेजा सारे विश्व में, और थोड़े समय में ही कृष्ण भक्ति विश्व के कोने कोने में पहुंच गई थी। 1971 में प्रभुपाद जी वापस भारत लौटे। प्रभुपाद जी भारत लौटे अपने विदेशी शिष्यों के साथ, लगभग 100 शिष्य थे, और हिंदुस्तान में प्रचार शुरू किया। और 1971 में एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ था क्रॉस मैदान में, और प्रभुपाद जी ने कहा, सब दिखाओ भारतीयों को कि तुम लोग कितने उत्साह से कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हो। तो ISKCON का पहला केंद्र खुला था बॉम्बे शहर में, आकाशगंगा में, नेपियन रोड। आकाशगंगा में 3000 रुपये महीने के किराए पर 7वीं मंजिल में पहला ISKCON का केंद्र खुला था। ये जो रासबिहारी मूर्तियाँ आप देखते हो, सबसे पहले इनकी उपासना हुई थी क्रॉस मैदान के फेस्टिवल में, और इसके पश्चात फिर यही राधा रासबिहारी को हम प्रॉपर लेकर आए आकाशगंगा में। आकाशगंगा में 4 कमरे का मकान था, और प्रचार शुरू हो गया था। उन दिनों में एक फिल्म स्टार था जिसने एक फिल्म बनाई थी, हरे रामा हरे कृष्णा राम। ये फिल्म बहुत चल गई थी, इट वॉज अ बिग हिट। इस फिल्म में ये दिखाया जा रहा था कि लोग भांग लेकर हरे कृष्ण का उच्चारण करते हैं। एक रूप से गलत संदेश दिया जा रहा था लोगों को। तो कईयों ने प्रभुपाद से कहा, हमें कोर्ट में जाना चाहिए, लीगल केस करना चाहिए। प्रभुपाद कहा, नहीं, कुछ नुकसान नहीं, लोग हरे नाम सुनेंगे और इसके द्वारा लाभ उठाएंगे। तो प्रभुपाद जी आकाशगंगा में प्रचार शुरू हो गया था। आकाशगंगा बिल्डिंग में पाकिस्तान का काउंसलेट भी था, और उन दिनों में बांग्लादेश से हिंदुस्तान का युद्ध था पाकिस्तान के साथ। तो कई लोग सोच रहे थे ये लोग CIA एजेंट हैं। CIA जानते हो क्या मतलब? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिका की जासूस की एजेंसी। क्योंकि उन दिनों में भारत का अच्छा संबंध था रशिया के साथ, और कमज़ोर संबंध था अमेरिका के साथ। तो लोग सोच रहे थे ये CIA वाले लोग आ गए हैं। तो प्रभुपाद ने प्रचार शुरू किया, और प्रभुपाद जो क्रॉस मैदान में उत्सव हो रहा था, 30,000 लोग आते थे रोज प्रभुपाद जी को सुनने के लिए। और उस क्रॉस मैदान उत्सव से 2 भक्त भी बने, राजनाथ स्वामी और लोकनाथ स्वामी। तो प्रचार बढ़ते गया। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि एक बड़ा मंदिर बनाया जाए। प्रभुपाद ने कई बार कहा, बॉम्बे इज द गेटवे ऑफ इंडिया। तो प्रभुपाद जी रोज सुबह बॉम्बे के अलग अलग स्थानों में जाते थे, स्थान देखने के लिए जहाँ के मंदिर बन सके। आकाशगंगा था नेपियन रोड में, और मालाबाई उन दिनों में हमारे ज़्यादा मेंबर मालाबाई हिल के इलाके में रहते थे। तो प्रभुपाद जी मालाबाई हिल जाते थे, अलग अलग स्थानों में जाते थे। किसी ने 1971 में प्रभुपाद से कहा कि जुहू में एक ज़मीन है 5 एकड़ की, और प्रभुपाद जी जुहू में आए इस ज़मीन को देखने के लिए। जब प्रभुपाद जी ने ज़मीन देखी तो उन्हें याद आया क्या कि विदेश जाने से पहले 1965 में जब वो श्रीमती महाराज जी के घर जाते थे, ये हरे कृष्ण लैंड उस वक्त एक बड़ा जंगल था। और प्रभुपाद जी ने एक प्रभुपाद जी ने एक भावना प्रकट की थी, अगर भगवान मुझे ये ज़मीन देंगे
तो मैं बड़ा खूबसूरत मंदिर बनाऊंगा उनके लिए। ये भावना, ये इच्छा बाबा जी ने प्रकट की थी 1965 में। तो 1971 में बाबा जी टैक्सी में आए थे ये ज़मीन को देखने के लिए, और देखते ही वो पहचान गए कि वही ज़मीन है जो मैंने 1965 में देखी थी। तो बड़ी कठिनाइयों के साथ बाबा जी ने डाउन पेमेंट का प्रबंध किया, 50,000 रुपये, छोटी सी रकम थी। तो जिस व्यक्ति की ज़मीन थी वो एक प्रसिद्ध अखबार का एडिटर भी था, फ्री प्रेस जर्नल था, और बॉम्बे का शहर भी रह चुका था। पर इस आदमी का नाम अच्छा नहीं था। ये कहा गया था कि कईयों से उसने पैसा लिया और किसी न किसी कारण सौदा कंप्लीट नहीं हो पाया तो पैसा रख लिया, और उसे यही प्रयास किया था प्रभुपाद के साथ। 2-3 सालों के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, और ये आदमी प्रयास कर रहा था कि ज़मीन उसे वापस मिल जाए। पर राके कृष्ण मारे कृष्ण राके के परम भगवान के सहयोग से और प्रभुपाद जी के दिल प्रयास से ज़मीन उन्होंने रखी, और अंत में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और उसकी पत्नी ने ज़मीन प्रभुपाद जी को ISKCON के नाम कर दी। एक समस्या हल हो गई, पर आगे योजना थी कि मंदिर बनाया जाए। तो जब ISKCON ने एप्लीकेशन दिया मंदिर बनाने के लिए, किसी न किसी कारण ये रिजेक्ट हो जाता था। और इससे पहले एक टेम्पररी मंदिर था जो कि सरकार के लोगों ने आकर तोड़ दिया था। प्रभात ठाकरे जो उस समय जीवित थे उन्होंने सहयोग दिया। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि एक बड़ा मंदिर बने, और हमने प्रभुपाद जी ने डिज़ाइन भी बनवा लिया था। जब क्रॉस मैदान का उत्सव हो रहा था, एक डच आदमी प्रभुपाद जी का लेक्चर्स को सुन रहा था, और लेक्चर से बड़ा प्रभावित हुआ। कोई इस व्यक्ति को प्रभुपाद जी के पास लेकर आए, और जब प्रभुपाद जी को पता लगा कि वो आर्किटेक्ट है, प्रभुपाद जी ने उनसे कहा तुम आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाओ इस मंदिर का। और प्रभुपाद जी के साथ राधा गोविंद जी मंदिर और कई मंदिरों के पिक्चर्स थी जो प्रभुपाद जी ने दिया इसे प्रेरणा लेने के लिए। और प्रभुपाद जी जब नैरोबी में थे, जब एयरपोर्ट जा रहे थे, उन्होंने हिल्टन होटल देखा, और प्रभुपाद जी को हिल्टन होटल का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। तो प्रभुपाद ने वो तस्वीर भी सुराब को दी, डच आर्किटेक्ट, और फिर प्रभुपाद जी के सहयोग से और निर्देशन में ये प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बना था। हालांकि ज़मीन रजिस्टर हो गई थी, जब भी कई कठिनाइयाँ थी, हमें परमिशन नहीं मिल रही थी, इजाज़त बनाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। यहाँ के जो म्यूनसिपल काउंसलर थे उस समय वो भी विरोध कर रहे थे, क्योंकि कई व्यापारियों ने सोचा था कि यहाँ बड़ा होटल बनेगा। तो प्रभुपाद जी हिम्मत नहीं हारे, प्रयास करते गए, और एक समय प्रभुपाद जी ने भक्तों को कहा अगर हमें इजाज़त नहीं मिले मंदिर बनाने के लिए, हमें हरे कृष्ण लाइन को बस स्टॉप बना देंगे। तो आप कहोगे बस स्टॉप कैसे, उसका क्या मतलब? प्रभुपाद जी को मतलब था यहाँ किताबें रखेंगे, हमारी बसें जाएंगी किताबों को बांटने के लिए, और जब समाप्त हो जाए वापस बस आएगी किताबों को लेकर, फिर जाएगी प्रचार करने के लिए। तो 1975 में बड़े प्रयास के साथ हमें इजाज़त मिली,
1975 में भारत में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। हमारे लिए वो इमरजेंसी बहुत अच्छी थी, क्योंकि 11 समय हम जाते थे लगभग रोज। एस.बी. चौहान वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तो उन्होंने सहयोग दिया और पुलिस कमिश्नर को कहा ISKCON को ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए, और फिर ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ इस प्रोजेक्ट का। पहले हम ये खुद ही बना रहे थे, और फिर प्रभुपाद ने देखा काम बहुत हंसते जा रहा है। हमारे एक लाइन नंबर थे मिस्टर धीर, लार्स एंड ट्यूब्रो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो 11 में हम गए थे उन्हें मिलने के लिए, और फिर उन्होंने जिम्मेदारी ली और ये प्रोजेक्ट फिर लार्स एंड ट्यूब्रो को दिया बनाने के लिए। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वो इस मंदिर में रहे। प्रभुपाद जी महाबलेश्वर गए थे, पूना गए थे, और जब प्रभुपाद जी बॉम्बे लौट रहे थे उस वक्त उनका मकान, उनका अपार्टमेंट 5वीं मंजिल में पूरा नहीं बना था। प्रभुपाद जी वापस आए, प्रभुपाद जी ने कहा आई वांट टू स्टे इन माय क्वार्टर्स, मैं अपने घर में क्वार्टर में रहना चाहता हूँ। और सुराब और भक्तों ने कहा इट्स नॉट रेडी, अभी तक तैयार नहीं हुआ। नहीं, उसमें ही रहना है, अगर अभी नहीं रहूँगा तो तुम लोग कभी भी तैयार नहीं करोगे। तो उस समय लिफ्ट भी चल रही नहीं थी और बहुत से कार्य अधूरे थे। प्रभुपाद जी को उठा कर ले गए पैलंकिन में ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल तक। जब प्रभुपाद जी एक दिन 5वीं मंजिल में थे और नीचे काम चल रहा था, टिक 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 टिक, तो भक्तों ने प्रभुपाद से कहा ये आवाज़ आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? प्रभुपाद ने कहा डिस्टर्ब, दिस इज कीर्तन। आवाज़ हो रही थी टिक टिक टिक, काम से प्रभुपाद ने कहा दिस इज कीर्तन, वेरी स्वीट। तो प्रयास था कि प्रभुपाद जी का श्वास कमजोर हो रहा था, और भक्तों का प्रयास था कि जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण हो जाए, उद्घाटन हो जाए। पर हम समाप्त नहीं कर सके प्रभुपाद जी के प्रकट होने से पहले। और जनवरी 15, 1978 में इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जनवरी 14 तारीख को मंदिर के उद्घाटन के समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री आए थे राजनारायण, और मद्रास के राज्यपाल आए थे। ये राज्यपाल प्रभुपाद जी को मिलने बकायदा आते थे। न्यूज़वीक मैगजीन एक बड़ी प्रसिद्ध अमेरिकन मैगजीन है, उनके 4 प्रतिनिधि या 3 हांगकांग से आए हमारी ओपनिंग को कवर करने के लिए, और उन्होंने एक आर्टिकल छापा फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, मतलब कि गरीबी से धनी। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी गए थे भारत से 40 रुपये के साथ, वो कैसे? तो प्रभुपाद जी ने कहा वृंदावन इज माई प्लेस ऑफ रेजिडेंस, बॉम्बे इज माई ऑफिस, एंड मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप। तो श्री प्रभुपाद जी राधा राजबिहारी की तस्वीर को अपने साथ उठा कर ले जाते थे हर जगह, और प्रभुपाद जी ने जितना समय बॉम्बे में काटा उतना समय किसी और केंद्र में नहीं काटा। बॉम्बे में 400 से अधिक दिन उन्होंने काटे थे इस मंदिर को तैयार करने में। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम यहाँ हैं। हम सब भक्तों का प्रयास रहना चाहिए कि प्रभुपाद जी की जो इच्छाएं थी उसको हम पूरा करें, ऊंचा स्टैंडर्ड बनाएं और भक्तों को आकर्षित करें कृष्ण भक्ति की शिक्षा का पालन करने के लिए। प्रभुपाद की
Radha Gari Radha Vishaka ki, Sitaram Lakshmana Hanuman ki, Vijay Gauritai ki, Heaven Earth Project ki, Gaur Premananda. Vishwanath Gopal Krishna Goswami Maharaj ki. Thank you very much, Maharaj. So we have amongst us a distinguished guest here, Sriman Prakash Ji Hinduja. Hare Krishna. We welcome him. He also, in the early days when Prabhupada was walking on the Juhu beach, I was told that he also used to walk with him. So we also would like to request him to come on stage. Please. Also, His Grace Surdas Prabhu. Surdas Prabhu, a long journey from late 1970s till now, holding several important positions. He is building, in addition to taking care of Bhakti Kala Kshetra, he is building a wonderful temple in Kargar. His Grace Surdas Prabhu. Now I request His Grace Narottam Prabhu to speak. Narottam Prabhu came specifically to Juhu to serve Sri Radha Das Bihari as the head pujari when the temple was opened. He is not only a very good cook, he is also a very artistic person, and he designs and he has a very artistic vision. In Prabhupada quarters also making them carpet or curtain, etc. He designs very artistically. I request Narottam Prabhu to speak few words. Hare Krishna, Raghav Prabhu, would you be kind enough to translate Narottam Prabhu's speech and also thereafter Vishwadei Mataji's? Is that okay, translation? Actually, do most people speak English or not? Most people understand English, that is most important, which they may not be able to speak. Well, they just have to listen. Yeah, you have to only listen. Is that okay? Okay, go ahead. Hare Krishna. The 41st anniversary of opening this gorgeous temple, I don't know where all the time went. I mean, we say that figure, but in one way it seems like 41 years. In another way, it just seems like the snap of fingers. To sit here today and speak to an audience of this magnitude compared to when we first opened the temple and how many people would be sitting in class or coming for darshan, it's also just incredible. So, Radharas Vihari Mandir was the desire of Srila Prabhupada to bring sanity, spirituality, rationality to our lives. Because modern day material life, in the morning everybody's running this way, in the evening everybody's running this way. What we're running after, it's hard to describe. But material pleasure can give temporary satisfaction. For a few minutes, you may be happy. For a short time, you may be happy. For example, you may be a good swimmer, but how long can you stay in the water? After some time, it's just you're tired. So, Srila Prabhupada introduced the process of love and devotion and service because the actual path to pleasure is not by doing what I think will make me happy. Because we're individuals, but at the same time we're part of a whole creation. We're all spirit souls. And to try to enjoy independently is not a very
Well, it has a predictable result, and that is basically death. So we live, we may be successful, but then ultimately we're booted out of this body, and we leave everything, all the people we love, our name, fame, bank account, everything gets left behind. So a temple is a place of eternality, a place of understanding that, yes, this life I may be American, next life I may be anything. Maybe there's a better way, maybe there's a way to put our energy into something that's not lost, that's something that we can build our future, our true future, and satisfy our true self. So when Srila Prabhupada came to America, he carried with him answers to questions that we as Westerners didn't even know we had. People were trying to enjoy their life, but it was a time of turmoil. And sitting under the tree, the Hare Krishna tree in Tompkins Square Park, with this small pair of hand cymbals from India, everything came from that. Simply one individual with total faith in his Supreme Lord, Krishna, sitting under a tree, sharing transcendental sound vibration. So now, here, there's not one man sitting under a tree. We have thousands and thousands of people, all with the capacity to share transcendental knowledge and to share transcendental vibration with the people that you come in contact with, whether it's your family, friends, business people, associates. So you have one thing and you double it, then you have two. You have two things and you double it, and then you have four. But if you have hundreds of thousands of people and you double it, it starts becoming very interesting. So Srila Prabhupada undertook so many difficulties to try to bring a cure for this material disease to all of us. He went to America, that America is the leading country of the world, and if somehow in America they can take this, maybe other people will follow them. And then he brought the Americans back to India as examples. See, this is your culture. Look how these people are practicing your culture, what you have forgotten. And Srila Prabhupada would always tell us that yes, the Westerners, Americans, Europeans, they're far away from Krishna. But due to advanced material life and frustration with that life, you're turning towards Krishna, looking for answers, looking for truth, looking for peace, looking for love. And in India, people are standing very close to Krishna, but looking to technology, looking for financial gain, looking for so many material things. Thinking maybe, oh, my grandmother told me these stories, Krishna, I know all this. Let me be professional. So when Srila Prabhupada arrived back in India with Westerners who were seriously chanting and following regulations and dedicating their lives to serving, it was a very good example to show the people from Bharat, look, think about it, wake up. Try to learn from people who have already gone through the gamut of material life. And it was a very useful way of preaching. Srila Prabhupada would like to introduce Henry Ford's grandson. He's a very successful person. How he has also added Krishna to his life. So, this is a movement of love and devotion and surrender, service, sharing and family. And these are very important values in India. Family is very important. Food is very important. So we are serving Krishna Prasad, food that's been cooked in a thoughtful, devotional manner, in a very clean way, and offered with a mind that's
absorbed in higher thoughts. So it's a very simple process, and there's no, I mean, we have the facility of such a beautiful temple, but you don't need a beautiful temple. You don't need a big temple. You can have a small altar in your home. You pick up your japamala, you can have the sky over your head. There's no real prerequisite for chanting Hare Krishna, for offering your prasad to Krishna, for trying to serve others and read spiritual literature, read Srila Prabhupada's books. And you can really have, even today, Srila Prabhupada's association with you when you open his books and read his books. So I won't take much time. There's many people to speak, but it is a glorious day. It's a 41 years anniversary of introducing such an amazing temple. It has grown so much, and we should take an opportunity of the temple, but also be inspired by the temple and have a temple within your own heart and mind and home, and talk to your friends, family, and the family will just expand unlimitedly. Thank you very much for your time. Thank you very much, Narottam Prabhu. We are also very thankful to Sriman Prakash Hindujaji. In spite of his busy day, he accepted our invitation and he is here with us. And every day, whenever he is in Bombay, after his morning walk, he makes a point to come to the temple to have the darshan of their lordships, Shri Radha Rasvihari, religiously, every single day. Also, he brings some other, his friends also here. And he and his family are great supporters of ISKCON. They have made a major contribution in making ISKCON Delhi's Glory of India project, Hinduja group. And also, they are making a major contribution to ISKCON Kharghar in making the Glory of Maharashtra. I request Sriman Prakash Hindujaji to speak few words about his association with ISKCON. And Prabhupada, association with Prabhupada and also ISKCON. Srila Prabhupada ki jai. Before we start, I would love everybody should chant the Maha Mantra of Hare Krishna, all of you, so that we enjoy the 41st year of the anniversary of Hare Krishna. Please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare. Thank you very much. Now let me tell you my real story of my life. How I met Prabhupada. I had never met with him any time in my life. When I was in my morning walk, I was by myself, and suddenly I see somebody calling me by my name. And I looked around, I saw 10 people with orange dress of saints were walking towards me. And one American gentleman by the name of Atra Swami, whom I knew from Iran, Atra Rishi, and he introduced me to Srila Prabhupada. And I introduced him myself, and I told him we are building a house. We have a house next door here, and he mentioned about the ISKCON temple, which is coming up just next to our house. So I said, I'll be very happy to come and pay a visit to you. And this is how the whole family, Hindu family, was able to see the ISKCON temple all around the world nearly. In London, we every day in the morning pay a visit over there. Here also in the morning, we come here, and
we have been looking into what Srila Prabhupada has done all around the world. Now look, when I was in Washington, I never knew that 50 years of the celebration of Prabhupada's visit to Washington was being celebrated. So a friend of mine called me. He says, Mr. Hiduja, you have to come. I said, look, I have a meetings, World Bank meetings are going on. It's been very hard. He said, no, you have to just come for a short while. I said, okay, I can't say no to you. So I had to cancel my other meetings and I went. And when I visited there, I was surprised to see in a 5-star hotel, they were celebrating the 50 years of Prabhupada's visit to Washington. And Tulsi Gabbard, 50 years of ISKCON. And Tulsi Gabbard, who you must have heard, she's running for the next President of the United States. She was there, and we chanted the same way of Hare Krishna, her mantra to all of them. And she, with her lovely guitar from Honolulu, Hawaii, she played this music of Hare Krishna. And this was recorded, and there, I'm sure there must be a CD available for all of you. And this morning when I read the newspaper that Tulsi Gabbard is going to run for the President of the United States, I was very happy that how Indian American, who is a follower of Srila Prabhupada, will be hopefully be the next President of the United States. Now, Prabhupada was a great personality in this world. He brought so much peace all around the world, whether he was Christian, whether he was American, whether he was Hindu, whether he was Muslim, any religion. And the way his knowledge in Bhagavad Gita was spread around everywhere and changing people into become vegetarian, that was a great achievement which he could do. I remember being in South Africa and I visited the temple over there. I was very happy to see that everywhere in the world, ISKCON temple has a guest house, they have a vegetarian meals over there, and people are so much devoted and they get peace of mind. So I asked a friend of mine, I said, you are chanting Hare Krishna, what do you get out of it? He says, we get, which money cannot give me a peace. But chanting of Hare Krishna gives me happiness, gives me peace, and gives me success. So this is how the knowledge of Hare Krishna was spread around, all around the world. And I wish Prabhu Gopal Krishna and Prabhu Surdas, who are playing a very important role in growing ISKCON temples all around India, and we hope we will have more and more ISKCON temples, and very soon we will see that we will have thousands of ISKCON temples all around the world. I want to thank you very much for all of you to give me this opportunity to be here today, and we hope to see you again soon. You'll excuse me, I'll have to leave because of my other engagements. I'm sorry that I was a bit late. Thank you. Haribo. We thank Sriman Prakash Hindujaji for spending this much time with us. Thank you very much, sir. Hare Krishna. Now I would request Her Grace Vishwa Devi Mataji to speak. She actually designed Shri Radha Rasbihari's outfits on the inauguration day of 1978. She had personally, those days they never used to give to the embroidery outside. All devotees will do their embroidery also. The veil of Shri Radha Rasbihari that she has personally made is on display in Srila Prabhupada quarters. The first room when you enter on the side, there are so many displays. There is a veil that the devotees led by her, they designed, and she has also designed several outfits, and she is continuing her parampara. Her daughter
somewhere here. She is continuing with the designing and helping in decoration of the temple. So she made sure that our parampara continues. Her grace, Vishwadevi Mataji. I just thought I would add a little something. In 1973, I went to Paris, and I was the head pujari in Paris, and also in charge of the kitchen from 1973 to 1975. So in Paris, I had the pleasure of meeting Vishwadevi, and we worked together on the deities for all the time I was there. In 1975, I came to Vrindavan, and I was the first head pujari of the Vrindavan temple. Vishwadevi was also in Vrindavan. So again, we worked with the deities in Vrindavan. In 1977, I came to Bombay to be the head pujari of this project, because everyone said, oh, you helped open Vrindavan, you had good experience, come to Bombay for 1 year and help set up the deity program. So I did come, and then we worked together for 10 years while I was the head pujari here, and she had free reign to be as creative as she could be in designing glorious outfits for the Lord. And now her daughter, who lives in Juhu and does service in the temple, was responsible for the beautiful flower decorations that you see in the temple today, and also she designed the outfit that the deities are wearing today. So that's just a little preface. So the point being that in serving Krishna, if there's something that you love to do and you dedicate that to Him, it's just unlimitedly interesting, and it's your path to liberation and surrender and devotion and love of God. So she has been on this path since the day I met her, and that is a long time ago. So each one of you can find what is the thing you love and try to do that as best you can for Krishna. Thank you very much, Hare Krishna. Namo Krishna Padaya Krishna Desire Tree Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gopani Krishna Krishna Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Dara Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Vanshaka Patarudya Chakti Vatsambhuda Chakta Gitanam Padani Yorashna Namo. I won't speak for very long, but because now time of the subject of the deities here in Juhu. Sorry. Well, it all started here, actually. Here, this is where Prabhupada left to America from here. This is such an important place. And sometime we spoke with Viraj Maharaj, and because Prabhupada needed Sumati Moraji's help to go to America, so her house not being too far from here, we always thought that he must have gone past this land in order to go to her house. And this is when he saw the land and prayed to Krishna and decided, this is where I want the temple to be, this is where I want Krishna to come. And one day we spoke about it, like I said, with Viraj Maharaj, and he said, yes, that's what happened. On the way to Sumati Moraji, he went past this land, and this is when Prabhupada said, this is the land I want for Krishna to build the temple. And many years after that, I lived not too far from Srimati Moraji, and we used to sit in her garden when she was becoming, poorly, so we should go visit her. And she told me many times that actually she did not think that Prabhupada will succeed. Not because he didn't have the capacity, but because he was an elderly gentleman who was going to a place that was so foreign to what he had left. He was in Vrindavan, in the Holy Dham, in Radha Damodar, seeing Krishna, being with Krishna, worshipping Krishna, and all of a sudden he uprooted himself in order to fulfill his spiritual master's instruction and desire to spread Krishna consciousness in the West. And he was elderly and frail, and so she told me a few times that she waited for him to contact her company, her shipping company, that he wanted to come back, but he never did. He never did. So for me here, in 1974, I was in Vrindavan actually,
helping with making the daily clothes for the opening of the Vrindavan temple with Surabi Maharaj's wife, and well, he was a Maharaj then, obviously. And with Surabi, he was building the temple. Before he built this one here, he built the one in Vrindavan. And Giriraj Maharaj, there must have been nobody at this time to make a dress for Janmashtami for here. So he asked me if I could come to Bombay to just make the Janmashtami dress. So I came with a friend, devotee friend, Shyamasundari. He never left. So we came here. And so I was making dresses for Vrindavan temple and for Bombay temple. I kept going back and forth. And as Narottam said, I was the last woman head pujari until he came, until the temple opened. And then they explained to me how, you know, it's a big temple, big project, and it's much better to have, like you said. So by Srila Prabhupada's mercy, and only by Srila Prabhupada's mercy, do we get to be engaged in service. Srila Prabhupada gives us a service, and for which I'm very grateful all these years to have been allowed to do. And Prabhupada's vision is manifested all around the world. Like this summer, it's going to be a big festival in London. It's going to be 50 years that ISKCON has been established in the UK. So the whole summer is going to be lots of festivals to celebrate the event. And it's the first deities that Prabhupada installed, London Ishwara, 50 years ago. So everyone can come and visit if you can. And about the Bombay temple, some things have changed so much since Prabhupada left, and we try to keep hearing, listening, reading hearing his classes, reading his letters in order to make sure that we are following his instruction the way he wanted them exactly. And to serve here is very special, very, very special to do service in Radharasa Vihari's temple. Shruti Kirti told me many times, you know, Vishva, this is the temple that this is a temple and the deities for whom Srila Prabhupada fought the most for. Prabhupada had to go through so many obstacles for Krishna to be moved into his new temple. And I remember the day he was moved, there was this shack, like they were describing on this side, outside the main entrance. And then we moved Krishna from this shack. We carried him through the temple room by the Vyasasan, and finally he was able to be in premises in a temple that fitted to him. And this is all due to Srila Prabhupada struggled, sacrifices for us. So I beg to remain engaged at his lotus feet, always. Hare Krishna with Srila Prabhupada. Thank you very much, Vishwamataji. I was passed a note saying that there is a BEST bus strike. So we are aware of it. But please don't crowd in the back. We have heard about how the devotees in the early days have to do so much austerity for the service of the Lord. So once in a year, little bit austerity can do. Prasadam service will not start unless there is a signal from here. Please come and sit here. There is a lot of space here. Please don't crowd in the back. Please come forward and sit. And please, little bit tolerance is required. We are aware of the time, and we are also going to request the speakers to be brief. So now I would request His Grace Devakinandan Prabhu from the late 1970s till now. It's a long journey in the second phase, who is instrumental in making the second phase possible. And not only that, he has done that, but he has also expanded his services in Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Rajasthan, and Bengal also. So, Zonal Secretary for all these regions, and he has a lot of responsibilities. So, we are fortunate to have him here. I request His Grace Devakinandan Prabhu to speak. Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama!
हरे हरे। मुकुंद माधव प्रभु अंग्रेजी में बोले, शायद आप लोग अंग्रेजी समझते नहीं होंगे, कृपया बैठ जाओ। पीछे वाले हम देख रहे हैं यहाँ से कौन कौन खड़ा है, सब लोग बैठ जाओ। प्रसाद है, काहे चिंता करते हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। जितना जल्दी बैठोगे उतना जल्दी मैं शुरू करूंगा, मैं देख रहा हूँ। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सत्यम विधातु निजवित्त भाषितम। भगवान अपने भक्तों के द्वारा कहे गए बात को सत्य करते हैं। जैसा कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने बताया कि राधा रास बिहारी यहाँ पर आए, उन दिनों राधा रास बिहारी जी एक झोपड़ी में रहते थे। प्रभुपाद ने राधा रास बिहारी से प्रार्थना किया कि हे राधा रास बिहारी जी, आप यहाँ रहें और हम आपको एक दिन महल बनाएंगे। और प्रभुपाद जी ने जो कहा था, भगवान प्रभुपाद जी के कहे गए बात को स्वीकार किए और प्रभुपाद जी का बात जो है वो खाली नहीं देने होने दिए। भगवान कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती नंदन, जाकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों के द्वारा कहा गया कोई बात असत्य नहीं होता है। और वो असत्य के रूप में आया यह राधा रास बिहारी का मंदिर। राधा रास बिहारी जी श्रील प्रभुपाद जी के हृदय के बहुत नजदीक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां भी प्रभुपाद जी गए, राधा रास बिहारी को अपने साथ रखे, फोटो के रूप में रखे, अपने मन में रखे। जितना समय था प्रभुपाद जी का, सबसे ज्यादा समय चिंतित यदि प्रभुपाद जी थे तो राधा रास बिहारी और इस जुहू प्रोजेक्ट के विषय में। सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किए प्रभुपाद जी सब जगह से, अमेरिका से सब जगह से ला करके, तो वह है जुहू टेम्पल। सबसे ज्यादा खत लिखे, पत्र लिखे प्रभुपाद जी, तो वह था जुहू मंदिर से। सबसे ज्यादा समय यदि कहीं प्रभुपाद जी ठहरे हैं तो जुहू में। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत का समापन भी यहीं जुहू में किए। अंतिम पुस्तक अंत लीला का, अंत वॉल्यूम का, चैतन्य का यहाँ पर समापन हुआ। तो राधा रास बिहारी कोई ऑर्डिनरी नहीं है और आज भी राधा रास बिहारी वहीं पर हैं। मुझे कई एक बार ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। योगेश गोपाल कृष्ण महाराज साथ में सेवा करते करते प्रभुपाद जी की जो निष्ठा राधा रास बिहारी में थी, आज भी राधा रास बिहारी जो भक्त निष्ठा के साथ में सेवा करते हैं उनको वे अवार्ड करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग किस प्रकार से कहाँ आए, जैसा कि मुकुंद महाप्रभु बताए कि यार समय नहीं है तो यहाँ समय नहीं लूंगा, लेकिन दो शब्द बात कहूंगा। ये जो हरे कृष्ण लैंड है, इसे न्यू कुरुक्षेत्र कहा गया है। शुरू से ही यहाँ पर लड़ाई होता रहा और आज भी चलता रहता है, कभी कभी थोड़ा कम हो गया है। हम लोगों को याद है कि जब यहाँ पर टेनेंट लोग थे, अभी तो कितना हेवन में बैठे हुए हैं, हेवन ऑन अर्थ के टेरेस पर। पहले ऐसा कुछ नहीं था। किन किन कठिनाइयों से भक्त लोग गुजरे हैं, स्ट्रगल किए हैं इस मंदिर को स्थापित करने में, प्रभुपाद जी को सहयोग करने में। यह असंभव चीज संभव हुआ है और यह हुआ है मात्र राधा रास बिहारी के कृपा से। मैं लास्ट ईयर भी कहा था कि यहाँ पर शुरू से दो चीज की कमी थी। एक था पैसा और दूसरा था हमेशा झगड़ा होना। जब से मैं होश संभाला मैनेजमेंट में, उन दिनों 84 में मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, उसमें 50,000 रुपया कर्जा में मंदिर था।
84 में 50,000 बहुत ज़्यादा होता है। नया नया मंदिर, पूरा मंदिर बना भी नहीं था, डोम्स नहीं बने थे, उसके बाद पुजारी डिपार्टमेंट में जाली सब नहीं लगा हुआ था, बहुत ये था, और विभिन्न प्रकार से यहाँ पर झगड़ा हुआ करता था। तो मैं तो 2 ही चीज़ हरे कृष्ण लैंड से सीखा, एक है पैसा कलेक्ट करना राधारास बिहारी के लिए, और एक है राधारास बिहारी के लिए झगड़ा करना। 2 चीज़ में सीखा बस, और जीवन में इसे मैं पार लगा दूंगा राधारास बिहारी का सेवा करते हुए। तो आज के इस पुण्य तिथि पर मैं यही बात कहूँगा कि जिस प्रकार से राधारास बिहारी श्री प्रभुपाद जी की मनोकामना को पूर्ण किए, कि प्रभुपाद ने कहा कि आपके लिए मैं महल बनाऊंगा, और कृष्ण शक्ति बिना नाई तार प्रवर्तन, बिना उनके शक्ति के नहीं हो सकता है। तो राधारास बिहारी के शक्ति से ही ये मंदिर बना हुआ है, और आज भी राधारास बिहारी का शक्ति है, और भक्त लोग अनुभव करते हैं, इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। सिंसियरली यदि भावना होगी राधारास बिहारी और हरे कृष्ण लैंड की सेवा करने। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हरे कृष्ण लैंड कोई ऑर्डिनरी स्थली नहीं है, यह धाम है, ये हरे कृष्ण धाम है। हरे कृष्ण लैंड हरे कृष्ण धाम है, जहाँ पर भगवान के भक्त लोग जाते हैं। तीर्था कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ जो सबको पवित्र करता है, उसको भी पवित्र करने जाते हैं भक्त लोग। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर आए हैं, राधारास बिहारी को लाए हैं। यह धाम है, ये पवित्र स्थली है। वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुर ये सब धाम है, लेकिन हरे कृष्ण लैंड भी धाम है, जहाँ पर राधारास बिहारी विराजमान हैं और प्रभुपाद जी आए। तो हम लोगों को सर्वतोभाव में राधारास बिहारी का सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, और उनकी कृपा आज भी वैसे ही है जैसे उन्होंने प्रभुपाद जी को दिया। श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु। 26 जनवरी कुछ इम्पोर्टेंट डेट है ना? क्या है 26 जनवरी? रिपब्लिक डे। और कुछ है भक्त लोगों के लिए? हाँ, कैंसिल हो गया। 26 जनवरी इज क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या इम्पोर्टेंस है? His Holiness Radhanath Swami Maharaj every year for last 10 years, more than around 10 years, he is giving a program here, 26 January, for all devotees, important date for us. But this year, it will not be 26 January. Because in Radha Gopinath Mandir, they have Pushpa Abhishek. So this year, it will be on 20th, 2020. Next Sunday, right? Next Sunday, the program will be there. So please mark your calendar. The Sunday, 20th January, His Holiness Radhanath Swami Maharaj will be giving a lecture right here, right here. His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki. Now I request His Grace Surdas Prabhu from late 1970s till now, a very long journey in serving the lotus feet of Shri Shri Radha Ras Bihari Ji in various capacities, cultivating several celebrities and engaging them in Krishna Consciousness, taking care of Bhakti Kalakshetra and making a very big, wonderful service in Mira Road, and then now he is taken up the Glory of Maharashtra project and wonderful projects coming up. His Grace, Surdas Prabhu. Hare Krishna. So whatever Mukund Madhav Prabhu said, you just hear and let it go from the next ear. But whatever you are hearing from the Vaishnavas, retain it, absorb it, and see that you implement in your life. So, my association with this temple goes way back, exactly 41 years. I came to this temple in 10th October 1978, not as a devotee, but I just wanted to join the Bollywood. Okay? So, while I came to this place, it was all direction of Krishna.
that I reached this place, and in 1977, on the front page of Hindu in Tamil Nadu, where I was graduating, I saw Srila Prabhupada leaving, and that's how, by his leaving, the whole India and the world was completely depressed. There's such a great Acharya left the body in Vrindavan. So that was a connecting point. And then coming to this place, all driven by Krishna only, and I had no idea about the Hare Krishna land here. I was supposed to go to Holiday Inn, which was there, because most of the Bollywood stars and other people would stay there, and I thought that that is the safest place. But Krishna has a different plan, and I stayed here for almost about 6 months. And it was all because of the mercy of the devotees and His grace, Chitrakar Prabhu. Hare Krishna, please don't crowd in the back. Prasadam is not going to be served. Please be seated and listen to the Vaishnavas who have rendered so much service here. And a little bit austerity, we are going to end very soon. And we are also requesting the speaker to be brief. Don't crowd, Prabhu. हरे कृष्णा, प्रसाद के भक्तों को निवेदन किया जा रहा है, थोड़ी देर बैठने का प्रयास कीजिए। आपका कुछ जाता नहीं है, थोड़ा समय जाता है, और उसके लिए प्रसाद बाद में मिलेगा। इतनी आतुरता नहीं दिखाइए प्रसाद के लिए। ओके, सो 1978 में यहाँ पर 6 महीना रहा, और उस वक्त प्रमुख से भक्त थे यहाँ पर नरोत्तम प्रभु, उनके साथ में विश्वदेवी माता जी, उनके पतिदेव, और सभी विदेशी भक्त थे। और उनके द्वारा मुझे इतना प्रेम मिला कि मैं अपने प्रोफेशन में जाते हुए भी संध्या आरती में लौट आता था, और गोविंदा में प्रसाद लेता था। और उस वक्त गोविंदा में आपको पता है कितने रुपए में थाली मिलता था? 8 रुपए में। हाँ, 8 रुपए में एक थाली, 12 रुपए में एक थाली। और शाम के समय में कुछ भक्तों को खिलाता था, और उनके साथ में बैठ के थोड़ा कृष्ण कथा करता था। उसके उपरांत समय बीत गया, और सभी भक्तों ने मुझे इतना प्रेम दिया। किसी ने प्रभुपाद जी का गोल्डन बटन दिया, किसी ने प्रभुपाद जी का मेरे को कुर्ता दे दिया, किसी ने प्रभुपाद जी का बीड बैग दे दिया। इस तरीके से मैं इतना ललाहित हो गया कि मैं हर संध्या और हर मॉर्निंग में आता था। और किसी भक्त ने बोला 16 माला जप करो, किसी ने बोला, मगर जितना आजकल के जमाने में आपके ऊपर एनर्जी बिताया जाता है, किसी भक्त ने मुझ पे उतना एनर्जी नहीं बिताया। और समय बीत गया, और बॉलीवुड में जो भी करने आया था, भगवान सभी लोग जानने लगे मुझे। मेरी एक अपनी कंपनी थी, मैं एक प्रोफेशनल डायरेक्टर एडिटर था, और छोटे ही समय में बहुत ख्याति मिल गई। मगर उसके बाद वैष्णव की ओर कृपा हो गई, और विशेषकर हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। उस वक्त यहाँ पर हम देखते थे कि चंद ही लोग आते थे मंदिर में। सुबह से शाम तक हार्डली 300 लोग आया करते थे, और शाम की संध्या आरती इस तरीके से होती थी कि जो कहीं पर नहीं होती थी। उच्च स्वर से गाना और उच्च स्वर से नृत्य करना राधा रास बिहारी के समक्ष। और ये हमारा शुरुआत था। श्रवण कीर्तन, जितने भी बड़े बड़े वरिष्ठ भक्त थे वो सब हमेशा यहाँ पर आते थे, और उनके द्वारा सेवा होती थी। फिर हम सुबह जाते थे, शाम को लौट आते थे। तो एक समय ऐसा याद रखिए, दिस इज ऑल फॉर यू टू लर्न। As long as you're going into the material life, and you're also simultaneously coming to the spiritual life, one day will come that you will lose a taste for the material life. Naturally you will give up the association of the materialistic people, because you will understand what is the difference between a material and spiritual life. Of your own you will experience that.
And then you'll be surprised. Gopal Krishna Maharaj said, why don't you give up the film? I had 4 assignments at the time. And I could pass on those assignments to my assistants. And Maharaj said that, why don't you take the responsibility of the restaurant? And in restaurant there was 2.5 years strike going on, and few of the devotees were told to go inside and clean the pots. आज आप भक्त लोग सब प्रसाद खा के घर जाते हैं. देखिए वहाँ पर लाइन, यहाँ पर कथा चल रही है, वहाँ पर प्रसाद की प्लेट के लिए लाइन लगा रहे हैं. प्रसाद खाना भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. That's very good. But not at the cost of giving up hearing. That shows that you are still prasadi bhakt, not Shravana bhakt. Shravan is very, very important. Very attentively. And if you attentively hear, you will make a radical change in your life. And whatever is in your story, in your karma, that's going to happen. But if you stick to the process of devotional service, you will transcend the modes of the material nature. And you will be connected with Krishna very eternally. That's what we have to learn now. Whatever you may be, materially you may be, whatever it is, in front of you, you have a great personality. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, double MBA from McGill University. He could give it in a snap of time for the pleasure of serving Guru and Krishna. If that increases in your life, this was going to become real heaven on earth. Not that you take prasadam, thali ko jhutha karna aur chale diye. So then he said that you take over the... I was not knowing how to manage the restaurant. I didn't know anything. But we started cleaning the pots. We tried to serve the Bollywood stars, those who would shoulder with me. And he was said, "Ye to pagal ho gaya yaar." Usi समय विनोद खन्ना गया था रजनीश के पास और मैं आया यहाँ पर. वो बोला ये तो पागल हो गया. So I used to hide because they would always tell me, all the big wigs who are there now, J.P. Datta, some David Dhawan, they were all strugglers with me. So all these guys, even Amitabh Bachchan, he was a small struggler at the time. I edited his film Yarana, Mithun Chakravarti, all these guys. But where they are and where I am, you can see the difference. So this happens only when you taste the association of the Vaishnavas. And if you don't have the association of the Vaishnavas, you're bereft of everything in your life. That's what we have to learn. Prabhupada created this wonderful place for us to render devotional service. Even if we don't have the qualities, but he invented a yukti where he brought all these Westerners so that we can see them and follow our life. Now that we have the idealistic personalities with us, we must dedicate our life. That's how Radharasa Bihari will be pleased. While rendering devotional service here, I always have got an inclination to do something more, and that's why I went to Veera Road. And now, while I was here, we got the land in Khargar, and it's going to be a wonderful temple. And it's not going to be complete without your contribution and without your dedication. You may come here, eat prasadam, go, but there's another temple coming up, and you have to give your time. Tanase, manase, dhanase. तीनों प्रकार से सेवा करना पड़ेगा. तो मेरा आपसे यही निवेदन है, ज़्यादा बोलने की अगर इच्छा है या सुनने की तो खारगर आइए, तो वहाँ पर संडे को मिलते हैं हम लोग. और इस वक्त सभी बड़े वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर, और मैं यही कहता हूँ कि प्रभुपाद जी का ये जो सुंदर प्रांगण है, ये एक अनूठा है, और इसमें अभी भी प्रभुपाद जी विद्यमान हैं, और प्रभुपाद जी की थोड़ी सी भी सेवा करेंगे, वो हर पल हर क्षण आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे और आपके जीवन की आध्यात्मिक धरोहर को बचाए रहेंगे. और ये इस प्रांगण का सबसे बड़ा योगदान है. राधारास बिहारी अति सुंदर हैं, और ये श्रील प्रभुपाद जी का ऑफिस है. सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी
अति ही प्रिय विग्रह है मेरे। राधा रास बिहारी अति प्रिय विग्रह है। श्री गौरनिताय जी अति प्रिय विग्रह है। यहीं पर मेरे जीवन का शुरुआत हुआ है और चाहूँगा कि ऐसे ही प्रांगण में मेरा अंत भी आ जाए और यही मेरा सक्सेस होगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द ब्लेसिंग्स टू यू। ऑल द ब्लेसिंग्स। हरे कृष्ण। Thank you very much, Subhas Prabhu. Now I request Mahaprabhu Prabhu. Mahaprabhu Prabhu can go for hours and hours also, but I especially requested him to be very brief so that now our devotees can start serving prasad. But prasadam is not going to be started. Please be patient, little bit more, little bit more. Mahaprabhu Prabhu. 14 जनवरी 1978 को मैं अपने क्लब में रमी खेल रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा आज हरे कृष्ण मंदिर खुल रहा है। मैं उसी समय यहाँ आया और आने के बाद में उसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाने के बाद अच्छा रहेगा कि मेन पॉइंट सिर्फ मैं आपको बताना चाहूँगा जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया। यहाँ मंदिर में आना एक अलग चीज है और प्रभुपाद जी ने जो दिया है हमको इतना बड़ा जगह, भगवत गीता में कहा है, हे अर्जुन, जो मेरे बारे में दूसरों को बताते हैं उससे प्रिय इस दुनिया में ना कोई हुआ है ना कोई होगा। प्रभुपाद जी ने जो ये मंदिर बनाकर सारे संसार के लिए कृष्ण भक्ति दी और उनकी कृपा से आज 830 हरे कृष्ण सेंटर मंदिर पूरे वर्ल्ड में बन गए। तो प्रभुपाद जी ने जो दिया है, सिर्फ एक पॉइंट मैं, जो कि मेरे को इंजंक्शन बहुत ज्यादा है, एक पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा आपके लिए प्लीज। मैंने 1000 बड़े पढ़े लिखे लोगों से एक प्रश्न पूछा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। हाईली एजुकेटेड पीपल, विश्वास करिए, आई लिव्ड इन अमेरिका, आई गॉट ग्रीन कार्ड, आई लिव्ड इन अमेरिका इंडिया, 55 बरस तक बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस किया। एक व्यक्ति ने मेरे को जवाब नहीं दे पाया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आज एक लड़के ने बोला मैं पढ़ाई कर रहा हूं और आगे पढ़ूंगा और आगे पढ़ूंगा और क्या करेगा, फिर नौकरी करूंगा, फिर क्या करूंगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, मकान लूंगा, गाड़ी लूंगा, बच्चे बड़े होंगे, बच्चे उनकी पढ़ाई कराऊंगा, उनकी पढ़ाई करने के बाद में उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे। क्या हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ बच्चे पैदा करना है? इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया है, अगर आप अपना काम करें और लाइफ को बैलेंस कर लें, बिलीव मी, अगर आप लाइफ को बैलेंस करेंगे, अभी तक जो कर रहे हैं आप 1 और 1 2 बनाएंगे, लाइफ को बैलेंस करेंगे 1 और 1 11 बनाएंगे। आप अपना काम करिए, किसी ने नहीं बोला है काम मत करिए। आप अपनी फैमिली को देखिए, किसी ने नहीं बोला कि काम फैमिली को मत देखिए। आप अपने जीवन को भगवान को, तीसरे वालों को भगवान को जोड़ दीजिए। थोड़ा टाइम भगवान के नाम का जाप करने के लिए दीजिए। थोड़ा टाइम प्रभुपाद जी की किताबें जो प्रभुपाद जी ने लिखी हैं उनको पढ़ने के लिए दीजिए। थोड़ा टाइम भगवान के नाम जाप करने का और किताब पढ़ने का, भगवान के भक्तों का संग, क्योंकि भगवान गीता में कह रहे हैं 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में, मेरे भक्तों का जो संग करेंगे भक्त मिल जाएंगे। आपको डिजायर होना चाहिए, आपकी डिजायर होगी तो शुद्ध भक्त मिलेंगे। आप बदमाश होंगे तो बदमाश लोग मिलेंगे आपको। इफ यू आर सिंसियर यू विल गेट सिंसियर डिवोटी, सिंसियर एवरीबॉडी। तो भगवान का भक्त का थोड़ा संग करिए और लास्ट में भगवान का भोग चढ़ा के प्रसाद खाइए। अगर ये 4 चीजें जो प्रभुपाद जी ने कही हैं, नहीं तो हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ बच्चों को पैदा करना और उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे, जीवन का कुछ नहीं। अगले फिर जीवन में हम कुत्ते बिल्ली बनेंगे।
लेकिन यदि प्रभुपाद जी के बताए हुए तरीके से हम जीवन चलाएंगे तो ये जीवन में आनंद के साथ रहेंगे और अंत में भगवान की सेवा में लग सकेंगे। हरे कृष्ण। Thank you very much, Mahaprabhu Prabhu. Now I request last speaker, few more minutes only. His Grace Brajahari Prabhu, a long journey from early 1980s as a Sankirtan leader, guest house manager, general manager, acting temple president and president. And he's with wonderful leadership. This temple is expanding with several projects coming up. And I request His Grace Brajahari Prabhu. Hare Krishna. So, Srila Prabhupada struggled hard to establish Hare Krishna land. And when I joined in 1984, Srila Prabhupada left, but still Srila Prabhupada, many disciples are there, had very loving relation we observed from that time. And later on, when we got some opportunity to do some service, some concrete service for Srila Prabhupada, so we tried our best. That time, actually, because of Srila Prabhupada and Srila Prabhupada's disciples, they established this so nice Radha Raswari temple. Because of their mercy, so we try to do some extended service in Hare Krishna land. And that time, in 1996, when there was Srila Prabhupada centennial, after that, by mercy of Sri Sri Radha Raswari, we have a very nice Sri Sri Radha Raswari committee who helped us to do many wonderful service here. And same time, we have Prabhupada wanted, so when 31 tenants were living here, Prabhupada wanted them to become devotee. If they can become devotee, they should go. So there is big story about that, but then gradually the tenants left, and we had one nice advocate who did with Mahaprabhu ji, and I went to that advocate, Mr. Basavada. He did everything free. Because of that, and Devakinandan Prabhu, he was working very hard to collect money. So not a single day we have dearth of money. We finished this Heaven and Earth project within 3 years, less than 3 years. And after that, many good things happen in this temple. But I can say this is by the mercy of Srila Prabhupada, everything happened here. So I don't want to take much time, although we can speak many things, many incident details, but people are waiting for prasadam. So thank you very much. Srila Prabhupada ki, Sri Sri Radha Raswari ji ki, Sri Sri Gaur Nitai ki, Sri Sri Sitaram Lakshmana Hanuman ji ki.